चलिए जी, आ गए हैं एक और नए टॉपिक के साथ। और इतना बेस्ट तरीके से मैंने ये कंटेंट इसमें डाला है। पीडीएफ पूरी तरीके से तैयार है, 2000 प्लस लोग ले चुके हैं। रिसर्च बुक है। जितना भी यूट्यूब पे और इंटरनेट पे अच्छा मटेरियल टीसीएस के पुराने क्वेश्चन हैं मैंने इसमें डाले हैं। आज का कंप्यूटर वायरस से रिलेटेड एग्ज़ाम में आना ही आना है। किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं विद एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ कि आपको ये बुक लेके कोई भी बुक मार्केट में 300-400 रुपये की आती है लेने की ज़रूरत नहीं है। और इतनी अच्छी तरीके से मैंने बुक कंपाइल की है, बिल्कुल कलर्ड पीडीएफ है और टेबलेटेड फॉर्म में है, तो पढ़ के ही मज़ा आ जाएगा। पीडीएफ देखिए। Computer virus is malicious program that is transmitted in the computer users without the user's knowledge. It replicates itself and affects the file and program on the user's PC. The actual intention of virus is to make sure that the victim's computer will never be able to work properly or even at all. These computer viruses present in multiple types and all of them can affect the डिवाइस डिफरेंटली। कंप्यूटर की वायरस की फुल फॉर्म पूछी जाती है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। कुछ डेफिनेशंस हैं, ये सारा इंपॉर्टेंट है जितना मैं करवा रहा हूँ। एग्जांपल भी देखिएगा इनका। बूट सेक्टर वायरस, ये वायरस है जो कि बूट सेक्टर को इफेक्ट करता है। ये वायरस सिस्टम एंटर करता है व्हेन द कंप्यूटर आर बूटेड फ्रॉम फ्लॉपी डिस्क। नाउअडेज दिस वायरस कैन इवन पेनिट्रेट इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल मीडिया। पहले फ्लॉपी डिस्क होती थी, अभी आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, तभी वो स्कैनिंग ऑटोमेटिकली चालू हो जाती है। और यूएसपी ब्रेन वाज द फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस क्रिएटेड 1986। ये इंपॉर्टेंट है, ब्रेन। उसके बाद देखिए, द बूट सेक्टर इंक्लूड्स ऑल द फाइल विच आर नीडेड टू स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। द वायरस आइदर overrides the existing program or replicates itself to another part of disk. Example is polyboot.b, anti-exe, etc. Direct action virus, when the virus connect itself directly to a .exe or .com file. Important है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। And penetrates the device while its execution is named a direct action virus. It is also known as a non-resident virus. It does not install itself. एग्जाम्पल में वियाना वायरस हो गया। दिस वायरस आर एक्टिव ओनली व्हेन द यूजर्स एग्जीक्यूट द फाइल कंटेनिंग द वायरस, अदरवाइज इट रिमेन्स डोरमेंट। मतलब वैसे ये डोरमेंट का मतलब क्या होता है? खाता आपका बैंक में डोरमेंट हो, उसका मतलब क्या होता है? एक्टिव बट नॉट डेड। सॉरी, मतलब एक्टिव नहीं है बट नॉट डेड। डेड नहीं है, एक्टिव नहीं है लेकिन वो मरा नहीं है, ठीक है, अपनी प्रक्रिया नहीं कर रहा बट वो बॉडी में है, ठीक है। जैसे ये होता है। सो दीज वायरस आर एक्टिव ओनली व्हेन द यूजर एग्जीक्यूट द फाइल कंटेनिंग द वायरस। अगर वो एग्जीक्यूट करता है तब ये एक्शन में आता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टाइप ऑफ वायरस इज टू रेप्लिकेट एंड इन्फेक्ट फाइल्स इनसाइड द फोल्डर। इट इन्फेक्ट्स फाइल that are specified in the autoexec.bat file. Vienna virus. Resident virus, multi partite virus, overwrite virus देख लीजिए। Unlike direct action virus, this type of virus install itself in the primary memory, ये important है, of the computer and then affects other file and programs. Resident virus can infect anytime when a operating system loads, heading towards file and program corruption. These viruses are hidden in the memory and are hard to find and remove from the system. Multi-partite virus. This type of virus are very infectious and can infect and spread in multiple ways. It can infect multiple parts of the system including program files, memory files and boot sector. If a multi-partite virus hits your system, then you are at risk of cyber threat. Overwrite virus. One of the most damaging virus, the overwrite virus can fully remove the existing program and substitute it with the malicious code by overwriting it. This type of virus generally spread through emails and are difficult to trace. To remove the virus, one needs to delete the infected file. Example, trojan reboot trival.88.d, etc. Polymorphic virus. So it's very difficult to track or remove as these viruses alter their code each time an infected file is executed. Spread through spam and infected websites. It encrypts or encodes itself in an encrypted way every time it infects a system. Example, Alcern or Thyrorac. File infector virus. As the name hints, it first infects a single file and then later grows itself to other executable files and programs. The main cause of the virus are game and word processor. ये important है. It is also named a parasitic virus which typically affects file with .exe or .com virus. This type of virus generally slow down the performance of program followed by many other damages.
Space filler virus. As the name implies, this type of virus fills in the empty space of the file with virus without affecting the size of file, such that the user cannot detect it easily. It is also recognized as a cavity virus. Macrovirus. It infects files that are created using certain applications or program that contains macros like .toc, .xls, .pot, ppt etc. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. इसका एग्जांपल है melisa.a. तो मतलब ये फाइल को इन्फेक्ट करता है जो कि कुछ एप्लीकेशंस के थ्रू क्रिएट की जाती है जिसके अंदर मैक्रोज होता है लाइक .toc, .xl. ये जो MS ऑफिस वाली एप्लीकेशंस होती हैं. ब्राउज़र हाईजैकर. So basically this type of virus target and modifies the user browser settings. It is often termed a browser redirect virus. It redirect the user browser to other malicious website. This virus can also lead to the shifting the default home page of the browser. File system virus. So it is also called a cluster virus or directory virus. It infects the directory of the commute by changing the path that indicates the location of the file. Example है dir2 virus, web scripting virus. This type of virus utilize the code of web browser and web pages. If the user enters such a web page, the virus can contaminate their computer. Web scripting virus can steal users' cookies and use the data to post on the user's behalf on the infected site. Example is JS Fortnite Fat virus. It is used to store all the information about the location of the files, unusable space, etc. Example is link virus. The most important is malware virus. It's malicious plus software is equal to harmful software. So basically it is a software used or created to disrupt computer operations, gather sensitive information or gain access to private computer system. It can appear in the form of code, script, active content and other software. So basically it is a general term used to refer to a variety of hostile, intrusive and annoying software. Example virus, trojan horses, worms, spyware, zombie, phishing, spam, adware and ransomware. आगे इसको थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है, फटाफट से कर लेते हैं. सो देखिए, ट्रोजन वायरस प्रोग्राम डेट एक्ट्स एज अ मैलिशियस और हार्मफुल कोड. इट इज़ डिजाइन टू कोज सम मैलिशियस एक्टिविटी और टू प्रोवाइड अ बैकडोर टू योर सिस्टम. एग्जाम्पल बीस्ट रैट, नेटबस्ट, गर्लफ्रेंड एट्सेट्रा. Virus. Computer virus are all small software programs that are designed to spread from one computer to another and to interfere with computer operations. Virus stands for vital information sources under siege. Backdoor हो गया. So backdoor program that allows a remote user to execute command and task on your computer without your permission. This type of programs are typically used to launch attack on the other computers. Distributed copyright software or media or hack other कंप्यूटर्स. हाईजैकर. हाईजैक आपने काफ़ी बार सुना होगा, ठीक है. हाईजैक कर लिया कोई वेबसाइट, किसी कंपनी की वेबसाइट. ए प्रोग्राम डेट अटेम्प्ट्स टू हाईजैक सर्टन इंटरनेट फंक्शंस लाइक रीडायरेक्टिंग योर स्टार्ट पेज टू द हाईजैकर ऑन स्टार्ट पेज, रीडायरेक्टिंग सच search queries to undesired search engine or replace search result from popular search engines with their own information. Worm basically is a standalone malware computer program that replicates itself in order to spread to other computers. Often it uses a computer network to spread itself, relying on security failures on the target computer to access it. Spyware, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, एडवेयर एंड स्पाईवेयर. स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर दैट एम्स टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और ए स्पाई मीन्स जासूसी करना और ऑर्गेनाइजेशन विदाउट देयर नॉलेज and that they may send some sensitive information to other entity without the consumer consent, and that assert जोड़ देना control over a computer without the consumer's knowledge. So basically it doesn't necessarily spend in the same way as a virus or worm. Most spyware is installed without user knowledge or by using deceptive technique. Deceptive मतलब cheating करने वाला. So spyware may try to deceive users by bundling itself with desirable software. Example is keylogger. Adware, zombie, phishing, ransomware, viper malware. सब important है. Adware or advertising supporting software is software package that automatically renders advertisement in order to generate revenue for its author. हम नहीं चाहते revenue आए, but ये advertisement चला देते हैं. The advertisement may be in the user interface of the software or on a screen presented to the user during the installation process. Zombie program take control of your computer and use it and its
internet connection to attack other computers or networks to perform other criminal activities. Phishing, most important, pronounced like the word phishing. P is a silent, is a message that tries to trick you in providing information like your social security number or bank account information or logon and password for a website. The message may claim that if you don't click on the link in the message and log in the financial website, that your account will be blocked, or you may be put in some disaster. And the next one is ransomware is the most important question एग्जाम में आता है जो it is a type of malicious software or malware designed to deny access to a computer system or data until a ransom is paid. मतलब जब तक आप उसको फिरौती नहीं दोगे, रैंसम नहीं दोगे, तब तक वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपको कंप्यूटर को खोलने ही नहीं देगा, वो एक्सेस डिनाइड दिखाएगा आपको, कोई भी आप एप्लीकेशन उसमें ओपन करने की कोशिश करोगे तो. वाइपर मालवेयर, a wiper is a type of malware with a single purpose to raise your user data and ensure it can't be recovered. So basically wipers are used to take down computer network in public or private companies across various sector. आगे ये टेबलेटेड फॉर्म जैसा कि मैंने बोला था, ये फटाफट से देख लेते हैं, फिर कल को हम एंटीवायरस पढ़ेंगे. रैंसमवेयर, यहाँ पे रियल वर्ल्ड एग्जांपल RYUK, disable victim access to data until ransom is paid. Fileless malware makes changes to file that are native to the operating system. तो ये एग्जांपल रियल वर्ल्ड है. एस्ट्रोथ. स्पाईवेयर, तो ये मैंने बताया था, कलेक्ट यूज़र एक्टिविटी विदाउट देयर नॉलेज. डार्क होटल, एडवेयर सर्व्स अनवांटेड एडवर्टीजमेंट. तो ये सारा कुछ आपको कीवर्ड्स हैं, बस ये आपको थोड़ा थोड़ा ये भी पढ़ लोगे तो बहुत सही है आप लोगों के लिए. भाई एक्चुअल वायरस में है क्या, जैसे स्पाईवेयर में आपकी नॉलेज के बिना यूज़र का डाटा ले लेता है, एडवेयर में अनवांटेड एडवर्टीजमेंट चला देता है, रैंसम में आपका एक्सेस डिनाइड लिखा था जब तक रैंसम पे नहीं करते आप, तो एडवेयर में फायरबॉल एग्जांपल हो गया. ट्रोजन में डिस्गाइज इट सेल्फ एज अ डिज़ायरेबल कोड. इमोटेट एग्जांपल हो गया. वोम्स हो गया, बेसिकली स्प्रेड थ्रू अ नेटवर्क बाय रेप्लिकेटिंग इट सेल्फ. स्टक्सनेट हो गया इसका एग्जांपल. रूट किट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. गिव्स हैकर रिमोट कंट्रोल ऑफ द विक्टिम, हैकर को वो रिमोट कंट्रोल दे देता है. जैकिन लो. की लॉगर्स इंपॉर्टेंट है. ओलंपिक विजन, ये इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल है. मॉनिटर यूजर्स की स्ट्रोक. तो बोट्स हो गए. लॉन्चेस ए ब्रॉड फ्लड ऑफ अटैक्स. इकोबोट. मोबाइल मालवेयर इन्फेक्ट्स मोबाइल डिवाइस. ट्रायाडा. वाइपर मालवेयर हो गया. विस्पर गेट, इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल हो गया. वाइपर इज अ टाइप ऑफ मालवेयर विद सिंगल पर्पस टू रेज यूजर डाटा. हाईजैक हो गया, तो बेसिकली इन्फेक्टिव वेब ब्राउजर दैट टेक कंट्रोल ऑफ द वेब ऑफ अ ब्राउजर सेटिंग टू रीडायरेक्ट द यूजर टू अ वेबसाइट और एडवर्टीजमेंट. बेबीलोन. टूल बार. कंड्यूइट. सर्च प्रोजेक्ट. iStartSurf.com. सर्च डेली .com. snap.do, ये सब रियल वर्ल्ड. सोर्स फोर्ज इंस्टॉलर. वोस्ट्रन. उसके बाद देखिए क्रिप्टो जैकिंग इज अ टाइप ऑफ अटैक दैट स्टील द कंप्यूटर power of the victim device in order to mine cryptocurrencies. King's botnet. Cohive. Crimeware is doing illegal online activities without the use of various malware types. Enable remote access into applications, allowing criminals to break into network for malicious purpose. DOS attacks, denial of service attack. So basically a type of attack on a service that disrupts its normal function and prevent other users from accessing it. Example real world के ping flood, SYN flood, ping of death, slow loris, anti-app application, HTTP flood. Backdoor malware, a real world example is FinSpy. Backdoor is a hidden entrance into application, network or device shortcut in a system that allows an unauthorized or authorized user to bypass security checks like username and पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टू लॉग इन. ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए. कल एंटीवायरस पढ़ेंगे. धन्यवाद.